back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're gonna do the second part of the chapter or the last lesson for the revision series. तो हमने about the author पढ़ लिया, synopsis हमने देख लिया, theme हम पढ़ रहे हैं, theme भी पढ़ लिया हमने, character sketches भी पढ़ लिया about M. Hamil, so मतलब जो टीचर है and फ्रांस उसके बारे में and summary हम पढ़ रहे हैं. तो समरी आज कंप्लीट कर लेंगे. इम्पोर्टेंट लाइंस भी आज कवर अप कर लेंगे 2 और 1 पॉइंट. तो मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइंस है ना उनके मीनिंग्स क्या है क्या स्टार्ट. So Emmanuel, the school teacher of Perugia, conquered states, informs us that this was his last French lesson because of the orders from higher authorities. Emmanuel does not scold France the day for being late and for not learning. Instead, he starts recalling memory when he used to scold students for doing the same and how all of them behaved in a manner that they had sufficient time to learn French. He further talks about French being a beautiful language. M. Hamill wears his special suit the day he carries on Sunday morning and on special occasions only. So M. Hamill जो टीचर थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनका ये लास्ट फ्रेंच लेसन होगा इस डे में एंड उसके बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाए जाएंगे फ्रॉम हायर अथॉरिटीज. So जब फ्रांस नीट आता है एम हैमिल डज नॉट स्कोल्ड हिम एट ऑल एंड जो एम हैमिल टीचर he does not scold him and instead he started he recalls those memories when he didn't when he used to scold France and other students for not recalling for not for not learning French and and how all of them made the manner कि उनके पास तो they had sufficient time. उनके पास तो बहुत ज़्यादा दिन है बहुत सारे days है to learn French. So kids वैसा उनका attitude था towards uh, the French language. So he further talks about being a beautiful French being a beautiful language, and M. Hamel was wearing his special suit which he used to carry on Sunday morning and on special occasions only. After entering the class, Frank notices the last benches that were usually empty and filled by the that they were filled by the villagers. On hearing about the orders of Berlin, he realized that all of them were there to applaud M. Hamel for his dedication of 40 years of service and to feel sorry for not taking French and not going to school. So जब France आया, when France came, what happened? On that day, he saw that empty back seats में जो ना villagers बैठे हुए हैं. They came here to applaud M. Hamill for his dedication of 40 years in the school, for teaching French. But and also were feeling sorry that they also didn't take French classes and not went to school. That day, all of them did their classwork and listened to M. Hamill with full attention, dedication, devotion, since they were aware of the fact that they were never going to learn French again, and M. Hamil was never going to teach them again. तो क्या हुआ उसी दिन क्लास वर्क उन्होंने अपना पूरा क्लास वर्क किया ना फुल डेडिकेशन. जब हमें ऐसा होता है ना कि जब हमें पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम अपना वैल्यूएबल टाइम वैल्यूएबल मतलब बहुत दिन में पढ़ सकते एग्जाम्स हो. अरे फिर 10 दिन होते हैं ऐसे तब भी नहीं होता 3 दिन होते तो फिर थोड़ा सा टेंशन आती है ना. तो जब हमारे पास वो मिल नहीं जाता तब हम लोग अपना फुल अटेंशन देते हैं डेडिकेशन देते हैं पूरा अपना उसमें फोकस कंसंट्रेशन हो जाता है. तो वही हो रहा है कि बस फुल अटेंशन दे वर what M. Hamlin was teaching. They were listening, they were hearing with full dedication, with full devotion, right? तो यही हो रहा था. As the clock struck 12 and noises of Prussian soldiers were audible to them, M. Hamlin, with a very heavy heart, wanted to bid goodbye to his classroom, his students, his French lessons, but the tears in his eyes and heaviness in his heart choke him and force him not to say a word. He takes the chalk in his hand and writes on the blackboard, "Live, live, laugh, France."
I am sorry, guys, if I'm not pronouncing it properly. I'm really, really sorry. Um, तो इसका ये मतलब होता है long live France. With utter anger and grief, he asked the students to go and said that the class was dismissed. तो क्या बोल रहे हैं कि 12 बज गए हैं एंड ट्रूजन सोल्जर्स की आवाज आने लग गई, तो एम हैमिल बहुत मतलब मतलब उसका टाइम आ गया था जाने का, उनका जाने का, एम हैमिल का। एंड व्हाट हैपेंड, ही वाज मिसिंग saying goodbye to his classroom, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनके फ्रेंच लेसन्स, उनकी आंखों में बहुत मतलब ऐसे टीयर्स आने वाले, बट यू नो हैवीनेस उनकी, और मतलब बहुत भारी भरकम हार्ट, जो यही बोला है चोक हिम, एंड बोला कि कुछ नहीं बोलो, नो नॉट टू से अ वर्ड। एक चौक लेता है with La France, which means long live France. With utter anger and grief, he asked the students to go and said that the class was dismissed. ये क्लास डिसमिस हो गई और आप लोग जा सकते हैं। दिस वॉज द चैप्टर द लास्ट लेसन। तो ये यही है कि हम लोग जब हमारे पास रहता है तो हम उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। यहाँ लैंग्वेज दिया हुआ है, या लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइम होता है, टाइम भी बहुत दिया जाता है, सफिशिएंट टाइम हो कि बहुत पढ़ने को है, बट जब टाइम खत्म हो जाता है तो हम लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, हम लोग ने मतलब सिर्फ मस्ती की है, राइट। तो यही इस चैप्टर में सीख है कि आप उस चीज़ को वैल्यू करो ना जो आपके पास दी गई है। इसमें फ्रेंच लैंग्वेज जो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोला है ना, जिसमें लॉजिक नहीं लगता है, तो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच को ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, तो दैट इज वाई अब देखो ना उनको जाना पड़ा, वो हटा दिया गया। अब जर्मनी इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन में मतलब जर्मनी पढ़ाएंगे, सो हम उस चीज का वैल्यू नहीं करते, वी डोंट वैल्यू दोस थिंग्स। तो इस चैप्टर से यही सीख मिलती है गाइस। सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, एंड मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइंस बता देता हूँ क्या आ सकता है। डोंट गो सो फास्ट बट यू गेट टू योर स्कूल इन plenty of time. The watchman says this to Franz as he sees him running for the class. तो बम मतलब ऐसे मत रुक जाओ भाई, है ना। The watchman through these words Franz with Franz that now there is a lot of time for him to read his learn French lessons, and he does not have to hurry for the lessons since they would not now be taught in the school. तो बोलो कि आप बोलते कि रुक जाओ फ्रांस भाई, रुक जाओ, अभी बहुत टाइम है आपके पास स्कूल जाने स्कूल के लिए पहुंचने के लिए। तो ये वॉचमैन बोलता है कि कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, अब आप ज्यादा हारी में मत रहो, क्योंकि अब आपके पास अभी टाइम है, यही फर्स्ट पॉइंट यही बोलते हैं। When people are enslaved, as long as they hold fast to the language, it is as if they have the key to the prison. By this instance, M. Hamilton ने बोला है that they must hold on to the language and guard it. मतलब उनके पास वो अपने language और उसको protect करना चाहिए, क्योंकि वो so that वो कभी भूल ना पाए। This line says that when a country is enslaved by some other country, when they leave the impact of the language and culture over the place, its language is a matter of pride. तो अपने बोल रहे कि अपने जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करो, गार्ड करो। तो यू नो वो अपना मतलब जो अपना इम्पैक्ट हो जाता है, अपना लैंग्वेज हो जाता है। तो लैंग्वेज क्या है, मैटर ऑफ प्राइड है ना, फॉर द कंट्री इट इज लाइक हम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में हिंदी तो मातृभाषा है ही है, बट देर आर सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स। पंजाबी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, राइट। तो यस वही है। Will they make them sing in German in the prisons? By this line, France wants to express the fear of being under German possession. He wishes to say that with the oppression from the Germans being so engraved in their roots, that the birds will also start speaking German. Birds of free heaven have their own language and persona, while Germany was so influential all Alsace and Lorraine, and they will steal away the essence of France so much that the pigeons will also start speaking the language. वही बोल रहे हैं कि फ्रांस ये बोलता है कि अब ये जो बर्ड्स को भी मतलब जो बर्ड्स पिजन्स को भी स्टार्ट बोलने पड़ेंगे, मतलब जर्मनी बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलने मतलब ऐसे ही, क्योंकि वो अब अंडर जर्मन पोजीशन हो गए हैं, है ना।
बॉर्डर जर्मनी आ चुकी है, तो दैट्स व्हाई ही इज स्कैर्ड। उसके अंदर उस इसमें वही बोला, डर के मारे उसने बोला कि जर्मनी क्या पिजन्स भी बोलने लगेंगे, तो यही है गाइस। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हमने इसी से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो वैल्यू, वैल्यू इज द ओनली थिंग कि आपके यू नो वैल्यू करोगे चीज को, आप उसको ऐसे मतलब यू नो बोलोगे कि बहुत टाइम है, हम बहुत पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं। तो वैल्यू, तो अभी भी जितना टाइम है आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो अच्छे से, बिकॉज नाउ यू ऑल्सो मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं, बट यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर्स, योर नोट्स रिवाइज करो, है ना। सो आई सी यू, सो थैंक यू।